Welcome to the third part of the chapter, India and other countries. In this part, we will talk about India's relation with countries that are far away from India. So we'll talk about Russia, we will talk about America and other countries. So let us begin with India and America first. So India and America are two powerful nations who have democratic political system. See, in the first part we will talk about India and China. First part में हमने इंडिया और चाइना के बारे में बात किया. चाइना इज ऑल्सो वेरी पावरफुल कंट्री, लेकिन चाइना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, चाइना में लोकतंत्र नहीं है. जैसे इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी, शिवसेना या कांग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या समाजवादी पार्टी, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है. लेकिन चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है. चाइना के लोगों को एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुन इलेक्शन में जिताना पड़ता है, कि उनके पास चॉइस नहीं है, तो वहां डेमोक्रेसी नहीं है. बट इन केस ऑफ अमेरिका एंड इंडिया, बोथ द कंट्रीज आर हैविंग डेमोक्रेसी. दोनों कंट्रीज में लोकतंत्र है. सो इंडिया एंड अमेरिका आर द ओनली बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर हैविंग डेमोक्रेसी. Right from the beginning, America was India's most important trading partner. So many Indians have went to America for education and work. So we are having many Indians who are working in America, who are living in America, because there are good living conditions available in America. Due to the presence of all these non-resident Indians, जो non-resident Indians है, non-resident Indians मतलब NRI, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनके पूर्वज इंडिया के हैं लेकिन अभी रहते हैं अमेरिका में या और कई कंट्रीज में, दे आर टर्म्ड एज non-resident Indians. So because of non-resident Indians are living in America, so the culture, social and economic relations between America and India have been increasing. So because of these people, there are good relations between India and America. There are many people of Indian origin. Indian origin के बहुत सारे लोग हैं वहाँ अमेरिका में गवर्नर या चीफ मिनिस्टर के पोजीशन पे भी थे, जिनके पेरेंट्स अमेरिका में गए थे. वन एग्जाम्पल इज बॉबी जिंदाल. ही वॉज गवर्नर ऑफ अमेरिका, वन स्टेट इन अमेरिका, और उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन भी फाइट किया था. सो इज वन ऑफ द ही इज द एग्जाम्पल दैट he can Bobby Jindal can be example that Indian origin people are in good position in America. After the end of Cold War, the Cold War ended in 1991. The military relations between India and America have increased on large scale. So before 1991, India was having slightly good relations with Russia or USSR. So after Cold War, India also established good relations with America. So before Cold War के पहले पाकिस्तान अमेरिका के साइड था. पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता था और इंडिया को रशिया सपोर्ट करता था. बट आफ्टर 1991, इंडिया ऑल्सो एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस विद अमेरिका. आफ्टर इंडिया accepted free trade economy, the speed of economic progress slowly increased. So what is free market economy? See, before 1991 में इंडिया में अगर मुझे फॉरेन कंट्री से कुछ सामान लाना होता था, तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स भरने पड़ते थे. तो टैक्स भरने के बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता था. लेकिन 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उस टैक्स रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, टैक्स रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया. So because of this what happened, we can freely trade with all the countries in the world. So 1991 के बाद इंडिया ने अपने मार्केट को या अपने इकोनॉमी को, आपल्या अर्थव्यवस्थेला ज्यांनी ओपन केलं, खुली अर्थव्यवस्था आणली. So because of the open of the economy, what happened, many countries started doing trade with India and foreign money also came to India. And because of that money, India's economic progress was increasing. When India conducted nuclear tests in 1998, there were tensions between relations of two countries. So 1998 में, in the leadership of Atal Bihari Vajpayee, India has conducted nuclear tests in Pokhran. So because of this test, there was tension in India and America's relation. But after some time, India was successful in telling America that we have conducted nuclear tests for our safety and we will not use that nuclear bomb first. So because of this, the tension has reduced and now we are having good relations between India and America. So what was the importance of that good relations? अभी good relations established होने के बाद, in 2005 there was civil nuclear agreement. India and America have signed a civil nuclear deal. So by this deal, America will help India to make nuclear energy. So पहले अमेरिका को इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं था, टेंशन्स हो गए थे कि इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था.
But now America is also helping India to make nuclear energy, nuclear reactors बनाने के लिए अमेरिका इंडिया को हेल्प करने वाला है. So what is Indo-US nuclear deal? So Indo-US nuclear agreement was signed between Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh was Prime Minister of India in 2005, and George W. Bush. He was Prime Minister of George Bush. He was President of America in 2008. And International Atomic Energy Agency (IAEA) has also approved that deal. In last 5 years, cordial relations of cooperation in different areas have developed between India and America. So now, during last 5 years, there are good relations that are established between India and America. So during Barack Obama's time also, and during Donald Trump's time also, India and America are having very much good relations. During Manmohan Singh's times also, and during Narendra Modi's times also, India and America are having very good relations with each other. Next important country for India is Russia. So he is Vladimir Putin, he is President of Russia, and he is Narendra Modi, Prime Minister of India. So we'll talk about India and Russia's relation. So India and Russia have always shared friendly relations. So right from India's independence, so India has got very much good help from Russia. So earlier Russia was called as Soviet Union. So before 1991 or before 1989, Russia was called as Soviet Union. सोवियत यूनियन मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज रशिया के पार्ट थे या सोवियत यूनियन के पार्ट थे. वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर. सो इन 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया. सो 1971 में इंडिया और सोवियत मतलब सोवियत यूनियन, रशिया, उनके बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था. सो एंड ड्यूरिंग 1971 वॉर, बांग्लादेश वॉर, इंडिया को रशिया से बहुत सपोर्ट मिला. सो बिकॉज ऑफ दिस बांग्लादेश में जो पाकिस्तान फाइट कर रहा था, तो पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका का सपोर्ट था. लेकिन जब भी रशिया ने इंडिया को सपोर्ट दे दिया तो इंडिया का पोजीशन और स्ट्रांग हो गया और इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया. It gave great impetus to the cooperation between two countries and defense and technology. So India has also got help from Russia in case of defense technology. इंडिया के जो बड़े बड़े कंपनीज है उनको एस्टेब्लिश करने में रशिया ने हेल्प किया है. इंडिया को फाइटर प्लेन्स बनाने में हेल्प किया है. इंडिया को बड़े बड़े शिप्स बनाने के लिए हेल्प किया है. सो इन ऑल द फील्ड्स रशिया हैज हेल्प्ड इंडिया. द सोवियत यूनियन हैज आल्सो गिवन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हेल्प to India on a large scale. So military help, economic help भी दिया हुआ है. So when Soviet Union, so what is Soviet Union? जो प्रेजेंट डे रशिया है, आज जो रशिया है, उसके साथ 14 और कंट्रीज थे. ये जो कंट्रीज है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, लटविया, ये अलग अलग कंट्रीज मिलके पहला एक रशिया कंट्री होता था जिसे सोवियत यूनियन कहते थे. सो 1989 के बाद सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया. सो रशिया में से 14 अलग कंट्रीज बन गए. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रशिया कितना बड़ा कंट्री होगा. आज भी रशिया सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड में एरिया के मामले में. सो पहले कितना बड़ा होगा क्योंकि उसमें 14 और कंट्रीज थे. सो इंडिया ट्राइड टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद रशिया. सो आफ्टर 1996 इंडो रशियन रिलेशंस बिगेन टू इंप्रूव स्लोली. इंडिया रशिया हैव जॉइंटली बिल्ड प्रोजेक्ट्स related to production of military equipments, production of mineral oil, etc. So ये अलग अलग जगह पे इंडिया और रशिया ने मिल के डेवलपमेंट किया हुआ है या प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किया हुआ है. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस. हाउ आर इंडियाज रिलेशंस विद यूरोपियन नेशंस. यूरोप में जो नेशंस है, सब नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन. सो एक्सक्लूडिंग इंग्लैंड और एक्सक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन को अगर हम एक्सक्लूड करेंगे, छोड़ देंगे, तो बाकी कंट्रीज का एक यूनियन है. सो अगर यूनियन में क्या इंपॉर्टेंस है कि जो उस यूनियन में आते हैं, जो कंट्रीज यूरोप के पार्ट है, यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, उनका एक कॉमन करेंसी है जो है यूरो. जैसे इंडिया का अलग करेंसी है रुपीस, अमेरिका का अलग करेंसी है डॉलर. तो लेकिन ये जो इंडिया और अमेरिका दोनों सेपरेट कंट्रीज है, लेकिन यूरोप के जो कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स है, उन सभी कंट्रीज का एक ही करेंसी है जो है यूरो. सो अगर मुझे इंडिया को या इंडियन गवर्नमेंट को अगर यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, अलग अलग कंट्री से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो बहुत टाइम लगेगा. लेकिन हम अगर सीधा यूरोपियन यूनियन से ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे तो जल्दी हो सकता है. सो वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन और इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस. So there are trade relations between European nations and especially with Germany, France,
Germany, France are investing on large scale in the fields of technology in India. So technologically जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज ने इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत सारा पैसे की गुंतवणूक की हुई है. सो apart from this, India gets the technology of production of weapons and from the European nations. So European nations have also helped India to make weapons. So if you take example of Rafale fighter planes, so Rafale fighter planes have been supplied from European countries to India. India is a major exporter in the fields of in the fields of engineering and information technology. So what is the benefit to European countries? जो दोनों तरफ से benefit होना चाहिए. So जैसे यूरोपियन कंट्रीज हमें टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर मिलिट्री वेपन्स के मामले में हेल्प करता है, वैसे ही इंडिया या इंडियन कंपनीज यूरोपियन कंट्रीज को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं. सो दोनों तरफ से फायदा होता है. सो बोथ हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्मनेस ऑफ फ्री ट्रेड. सो बोथ ऑफ द कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन ऑल्सो एंड इंडिया ऑल्सो, बोथ आर सपोर्टिंग फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड मतलब कोई बैरियर नहीं है बीच में, टैक्स बैरियर खत्म हो जाते हैं, टैक्स खत्म हो जाता है या टैक्स बहुत कम हो जाते हैं. So India and European nations are cooperating with each other as well. Several treaties have been signed in the fields of climate change, clean energy, defense. Clean energy means using wind energy or using nuclear energy instead of thermal energy and thermal energy. So they have signed treaties. डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि रफाल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इंडिया को हेल्प कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज, और दूसरे वेपन्स बनाने के लिए इंडिया को हेल्प किया हुआ है. सो डिफेंस को प्रोडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेररिज्म, इन सभी के ऊपर इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं. द कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट. सो if we want to get India developed, then the help from European countries is very much important. So India should have good relations with European countries. Next, we will talk about India's relation with countries in the African continent. So this is the photograph of all the leaders of Africa and Narendra Modi, Prime Minister of India. See, India has taken steps to build cooperation between India and continent of Africa. See, having close relations with Africa will be beneficial for India because Africa is good in natural resources. अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे अवेलेबल है. सो अगर इंडिया को फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो अफ्रीका से नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं. और अफ्रीका एक एमर्जिंग मार्केट है. अफ्रीका में अगर जब भी डेवलपमेंट होगा सो वहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लोग या ये प्रोडक्ट्स इंडिया सप्लाई कर सकता है. सो फ्यूचर में अफ्रीका एक पोटेंशियल मार्केट है इंडिया के लिए. सो इंडिया शुड एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस विद अफ्रीका. Many countries in Africa are developing rapidly. India has shown its readiness to help in all the round development of African youth. So जो countries develop हो रहे हैं उसे development करने के लिए इंडिया ने बहुत मदद किया हुआ. या अफ्रीकन बच्चों की, अफ्रीकन यूथ को डेवलप करने के लिए वहाँ स्कूल्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, या वहाँ कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, या वहाँ के लोगों को इंडियन कॉलेजेस में स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश की है. सो बिकॉज ऑफ दिस अफ्रीकन यूथ का डेवलपमेंट होगा, अफ्रीका के यंग लोगों का उनका डेवलपमेंट होगा. इंडिया हैज ऑल्सो एग्रीड टू गिव इकोनॉमिक हेल्प एंड इवन ग्रांट्स एंड ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन डिफरेंट एरियाज लाइक टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म. सो हर जगह में इंडिया ने अफ्रीका को डेवलप करने के लिए ग्रांट्स दिया हुआ है या फिर इकोनॉमिक हेल्प दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं. India's energy needs can be fulfilled by energy-rich countries like Egypt, Nigeria, Angola, Sudan. So इन countries में coal reserves या natural gas reserves, petroleum reserves बहुत अच्छे अवेलेबल है. सो अगर इंडिया को एनर्जी डिमांड चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इन फ्यूचर वी कैन गेट दैट एनर्जी डिमांड फ्रॉम दिस कंट्रीज. इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज ट्रेड विद अफ्रीका. द समिट, सो वी सॉ दिस फोटोग्राफ. सो दिस इज द समिट, इंडो African summit, that is occurring between India and African continent. So the summit conference of India and Africa was held in 2015. So representatives of 54 African nations, so 54 nations, अफ्रीका के जो nations है 54 nations से लोग उस summit में आए थे, उस conference में आए थे, उस meeting में आए हुए थे. So in this conference, discussions were held on many global issues. For example, climate change, terrorism, piracy, etc. Climate change, see, as the temperature of the earth is increasing, global warming हो रहा है, तो global warming के वजह से अर्थ का क्लाइमेट इंक्रीज हो, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका इफेक्ट
अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहा है, जैसे अनइवन रेनफॉल हो रहा है या कहीं जहाँ डेजर्ट एरिया है वहाँ रेनफॉल हो रहा है. सो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंडिया और अफ्रीका के कंट्रीज ने डिस्कशन किया है. नेक्स्ट इज टेररिज्म के ऊपर. बोथ मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म. सो and also India is facing problem of terrorism. So both of them have cooperated with each other. Then piracy. Piracy, you must be knowing piracy मतलब illegally किसी के कंप्यूटर में या किसी के सिस्टम में जाके डेटा को चुराना. That is piracy. और one more thing is we must be seeing various movies that are copied from some sources and they are illegally selling that movies. जैसे हम YouTube पे या कहीं मूवीज देखते हैं जो मूवीज रिलीज होने के 1-2 दिन बाद हमें अवेलेबल होते हैं. सो दिस मूवीज आर पायरेटेड मूवीज. नेक्स्ट इज इंडिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन. सो दिस इज इंडो पैसिफिक रीजन. ये इंडियन ओशन का रीजन और ये पैसिफिक ओशन का जो कंट्रीज आते हैं, जो ये जो रीजन है इसे इंडो पैसिफिक रीजन कैसे कहते हैं. सो विल सी हाउ इज इंडियाज रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन. सो डिफरेंट कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, Australia and other countries are also part of this region. So we will see what are the India's relation with these countries. See, Indo-Pacific are include countries like Japan, Australia, New Zealand and South Asian nations. So Indo-Pacific nation includes all the countries that are in Pacific Ocean, Japan, New Zealand, Australia and other countries that are located here. And we will see about how India's relations are with these countries. See, all these have close trade relations with India. Many companies have been invested money in India. So जो जापान के कंपनीज है, जैसे हमको पता है कि बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जापान हमें हेल्प कर रहा है. सो मेनी देर आर डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन हु हैव इन्वेस्टेड मनी इन इंडिया. Then treaties have also been signed between India and Australia about social security, extradition of criminals. अगर इंडिया का कोई क्रिमिनल अगर ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है और वहाँ छुप के बैठा हुआ है, अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसे अरेस्ट कर दिया तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अगर इंडिया का कोई मुस्लिम आपके पास है तो आप उसे हमारे पास लेके आ जाओगे, हमें सौंप दोगे. सो दैट इज extradition of criminals, the treaty that was signed between India and Australia. The mission against smuggling of drugs, so ये जो drugs मिलते हैं उसे रोकना, and terrorism and art and culture. Japan cooperates with India in basic facilities, economic cooperation, information technology, atomic energy and railways. So in different fields like atomic energy, information technology, economic cooperation, basic facilities available करके देना, railways, इन सभी चीज़ों में जापान इंडिया को पता है कि बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जापान ने हेल्प किया हुआ है. तो और कई जगह पे भी जापान हमें हेल्प कर रहा है. सो जापान हैज एग्रीड टू एक्सटेंड कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल हेल्प टू इंडिया इन डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कोस्टल एरियाज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जस्ट लाइक मालदीव्स के बारे में हमने बात किया था कि मालदीव्स के नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेस है ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करते हैं. वैसे ही जापान और इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेस है ये मिल के ट्रेनिंग करते हैं. अगर इंडिया और जापान दोनों को चाइना से खतरा है, दोनों को चाइना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो जापान और इंडिया दोनों मिल के चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इन दोनों कंट्रीज मिल के नेवल एक्सरसाइज करते हैं, दोनों मिल के ट्रेनिंग करते हैं. उनका सपोर्ट कभी यूएसए इज ऑल्सो सपोर्टिंग देम इन सम टाइम. So carried out between navies and coast guards of both the countries. So both the countries, Japan and India, Navy of Japan and Navy of India, Coast Guard, both of them are coming together and they are training together. That is naval exercise. Next we will talk about India and Southeast Asia. So these are the countries that are part of Southeast Asia. So these are the countries like Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand and other countries. So in total there are 10 countries that are part of Southeast Asia. India is part of South Asia and these countries are coming and becoming part of Southeast Asia. So India has very cordial relations or very good relations with Southeast Asian nations like Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Brunei. All these countries are part of Southeast Asia. So there are 10 countries in total. And in countries का एक organization है, उस organization का नाम है ASEAN. उन कंट्रीज का नाम है उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आसियान. सो आफ्टर 1991 इंडिया चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी एंड अडॉप्टेड अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. सो आफ्टर एज वी आर नोइंग दैट आफ्टर 1991 इंडिया ने अपना इकोनॉमी ओपन कर दिया. वहाँ जो रेस्ट्रिक्शंस थे पहले
जो टैक्स भरना पड़ता था या बहुत सारे गवर्नमेंट से परमिशंस लेना पड़ता था ट्रेड करने के पहले, ये रेस्ट्रिक्शन सब हटा दिया गवर्नमेंट ने. सो आफ्टर 1991 इंडियाज इकोनॉमी वॉज फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी. सो आफ्टर दैट ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैव ग्रोन. सो जब ये मार्केट ओपन कर दिया इंडिया ने, सो बहुत कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने लगे, अच्छा ट्रेड होने लगा. सो इनिशियली द पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड विद साउथ एशियन कंट्रीज इज नोन एज लुक ईस्ट पॉलिसी. सी एज दिस पार्ट इज इन ईस्ट ऑफ इंडिया, जो पूर्व पार्ट में है इंडिया के, सो वहाँ लुक ईस्ट पॉलिसी था. सो इंडिया इन कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहा था. सो दैट पॉलिसी वाज कॉल्ड एज लुक ईस्ट पॉलिसी. But after Narendra Modi's government, after 2014, the policy was changed to Act East. So now we will not only look, we will also act. We will also come together and we will talk with all the countries in the world, or all the countries in Southeast Asian nation, all the countries in Southeast Asian region. So in 2000, in this year, in 2018, during the Republic Day parade, so the chiefs from all the 10 countries are coming and they will experience India's Republic Day parade. So जो दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड होता है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट ने 2018 में इन जो साउथ ईस्ट एशिया के जो ये 10 कंट्रीज है, इन 10 कंट्रीज के लीडर्स को इनविटेशन दिया हुआ है. दे आर कमिंग एंड दे विल कम एंड एक्सपीरियंस इंडियाज रिपब्लिक डे परेड. So next we will talk about India and West Asia. The West Asia includes countries like Saudi Arabia, UAE, Kuwait and other countries. So West Asian countries are primarily suppliers of oil and natural gas. As we must be knowing, all the countries that are in West Asia, Iran, Iraq, Saudi Arabia, UAE, all these countries are very much good in natural oil or crude oil reserves, natural gas and crude oil. India has traditionally had good relations with these countries. India depends upon the oil coming in from West Asia. So from West Asia, we are getting majority of oil. Oil means oil means petroleum and coal. Petroleum and diesel. India exports oil from Iran, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and United Arab Emirates. So United Arab Emirates is Dubai. We get modern technology for agriculture, defense equipments from Israel. So Israel is also very much important for India. Recently, Israel's Prime Minister came to India. So he was on official trip to India. So Israel is helping us with agriculture and defense equipments. Also, India's relations with Indians living in Israel for their jobs or business, they have also major contribution towards the economy. So there are many people from Israel are living, Indians are living in Israel, and they are also helping both India and Israel. The main objective of India's foreign policy is to maintain friendly relations with all the countries. As we have seen in this chapter, India is always trying to establish good relations with other countries. So India's foreign policy is dependent on two factors. First is peace and second is mutual cooperation. So India is always trying to establish that. Some of the times when the countries are good, like other countries expect China and Pakistan. So we are successful in establishing good relations, but there are some countries like China and Pakistan which are not trying to establish good relations with India. So because of this, these countries are not having good relations with India. So the main objective of India's foreign policy is to maintain friendly relations with all nations and help each other as to bring about development of India as well as other nations. So if there are friendly relations with India and other countries, then only the countries will come together and they will do development of each other. If the relations are not good, then the development will also not. So for both the countries to get developed, then we should have good relations with all the countries in the world, and India is also trying to establish good relations with all the countries in the world. So hope you have understood this chapter, and if you have understood, please share this video with your friends, and if you are having any doubts or if you are having any queries regarding any of the points, then please comment below, and please share the video with your friends, and please subscribe to the channel. And thank you for watching.